Hello. So let's start with the second session of simple and compound interest. Before this, since we are done with the first session of compound interest, let me just give you a quick recap of what all we covered in the first session. So starting with the basics of simple and compound interest, and basically starting with the basic of interest, we just had a discussion regarding the terminologies related to simple and compound interest, which includes P, R, T, A, and I. Then we talked about the formula related to interest, the basic formula. And then we talked about how simple and different compound interest are different from each other. We took certain examples for that. And we started with the concept of simple interest, where we derived the entire formula for simple interest. Later on, moving with a condition when different rate of interest are applicable in the same tenure, differential rate of interest for the case, we discussed that and we got to the formula. Later on, we discussed one more question related to simple interest only, and that was all about simple interest. Today, we'll be starting with the concept of compound interest. So, as in the previous session that we had, I just gave you a basic overview about compound interest. I'll be just elaborating the same in this session. Going ahead, like what happens, जैसे मैंने example दिया था last time, कि suppose you are borrowing 10,000. At the end of 1 year, आपने 10% के हिसाब से इसमें 1,000 rupees का interest दिया. Second year will be calculating interest on 11,000 in case of compound interest. 1100 का interest हो जाएगा. Third year will be calculating on 12,100. 1210 interest हो जाएगा. So basically what is happening in case of compound interest, the value keeps on increasing. Your interest keeps on increasing every year, which is quite different from what we did in simple interest. Simple interest में it wasn't increasing every year. It was the same until or unless your rate of interest do not change. यहाँ पे it keeps on increasing. वहां पे we were calculating it on the principal value every time. यहाँ पे we are calculating it on the amount every time. So let's start with the concept of compound interest. Generally, when I ask about the formula related to compound interest, the most common formula that I get is P bracket 1 plus R upon 100 raised to the power T. Students consider this formula to be the formula of compound interest, which is a wrong one. Sorry. We need to understand why the formula is wrong and what can be the correct formula. The third most important thing is why we are getting a wrong formula. So what I believe is generally we are getting a wrong formula because we don't know the derivation of the formula. And secondly, we have mucked up the formula in the past. तो जब अपन ने बचपन में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था तब बेसिकली अपन ने इस फॉर्मूले को रट लिया था. Over a period of time, we might have forgotten the formula. But since I told you कि percentage से related है, application of percentage है, so what we'll be doing is कि we will be deriving the formula by ourselves in case of compound interest. Starting with it. देखिए, basically हो क्या रहा है समझने की कोशिश करते हैं. आपने एक प्रिंसिपल लिया, उस पे R% interest charge किया. Now the second time when you're charging interest, that is to be calculated on the left value or the right value. Logically the answer is right value. मतलब ये जो मैंने R% चार्ज इंक्रीज वैल्यू आई थी इसको फर्दर R% से इंक्रीज कर दिया. फिर थर्ड टाइम फिर से R% से इंक्रीज कर दिया. एंड आई केप्ट ऑन डूइंग द सेम फॉर T टाइम्स. फाइनली जो मेरे को वैल्यू मिला वो मेरा अमाउंट था. इज दैट क्लियर? आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे सक्सेसिव इंक्रीमेंट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मैंने आपको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताया था. What we were being supposed to calculate is सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लिखना होता था जो यहाँ पे P है. So I wrote down P for that. पहला ब्रैकेट जैसे ही आएगा, it's an increment of R%. I'll multiply by a bracket 100 plus R upon 100. Second bracket 100 plus R upon 100. Third 100 plus R upon 100. I'll keep on doing the same for T times. You know this thing very well, and that's equal to A. You know this thing very well कि in case if the same value is to be multiplied several times, like मैं आपको बोलता हूँ आप मुझे 5 को 7 times multiply करके बताइए 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5 into 5. तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह आप इसको 5 raised to the power 7 लिख देते. Same is the concept which I am applying over here. P 100 upon 100 plus R upon 100 की पावर T लगा देता हूँ equal to A. ये फॉर्मूला आपने मुझे बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए. गेटिंग इट? ये अमाउंट का फॉर्मूला है. मैंने आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पूछा था. अब इंटरेस्ट निकालना है तो व्हाट आई डू इज आई सब्ट्रैक्ट प्रिंसिपल फ्रॉम अमाउंट. सो आई हैव CI इक्वल टू A minus P which is P 100 plus R upon 100 की पावर T minus P. So this is the correct formula for calculating compound interest. I hope you are clear with the derivation as well.
So if this is clear, you can take a note and we can go ahead with the same. I hope that's clear. Going ahead. If differential rate of interest is applicable in this case, as in अगर rate of interest को मैं in between the tenure vary कर दूंगा तो क्या होगा? We'll just figure it out. सबसे पहले प्रिंसिपल P है, rate of interest sorry. So rate of interest I'm taking it to be R1% for the first 2 years, R2% to be the next for the next 3 years. You are supposed to calculate amount. Take a pause, hold the video, get your answer, and then we'll discuss. Okay, so I believe you must have got the answer by now. इसमें भी छोटी छोटी सी mistakes जो generally students कर देते हैं. I hope you might not have committed the same, but still we'll look into it. देखिए, बच्चे क्या होते हैं जल्दीबाजी में रहते हैं, so they directly write down the formula or the most common one which I generally get, P 100 plus R1 upon 100 की power 2 plus P 100 plus R2 upon 100 की power 3. Purely a wrong answer. आई होप जिनको समझ में आ गया है उनको समझ में भी आ गया होगा कि मिस्टेक क्या है. जल्दी नहीं करनी है. वी डोंट नीड टू रश अप थ्रू द थिंग्स. सिंपल सा है. मैंने एक बहुत सिंपल सा एरो डायग्राम बनाया था. इफ यू मेक द एरो डायग्राम अगेन यू गेट द आंसर वेरी इजीली. सो इट इज बेसिकली पी, पहले R1% इंक्रीमेंट, फिर R1, फिर R2, फिर R2, फिर R2 एंड वी आर डन विद इट. सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने को आते ही अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला. सबसे पहले मैं P लिखूंगा 100 plus R1 upon 100 for the first arrow, 100 plus R1 upon 100 again for the second arrow, and for the next 3 arrows, I'll write 100 plus R2 upon 100 3 times equal to A. If I'll sum up, I'll get P 100 plus R1 upon 100 ka square, 100 plus R2 upon 100 ka cube equal to A. So this is the formula for calculating amount in case if the rate of interest is varying, it's differential or it is changing in between the tenure. Clear? I hope we can go ahead with this. You can take a note. If this is clear, it's a question on the screen. Again, a similar question to what we did in case of simple interest, but the answer is going to be different this time. Take your time. Try to get me the answer. Pause the video. Take 2 minutes. Get your answer. Then we'll discuss. Okay. So I believe you must have got the answer by now. Let us discuss. I guess we can discuss with this. The correct answer, which I should tell you at the beginning only, it is 6 years. I hope some of you must have got the answer. Some of you might not have got the answer, but whatever it is, we'll discuss that. So again, a sum of money. We are not sure of the sum of money being given to us. I am assuming the principal to be 100 in this case. Is that clear? It becomes 7 times of itself. Matlab, the amount is 7 times, which is 700. The similar case as we did in the previous one. In a tenure of 3 years, in a duration of 3 years, time को 3. Rate नहीं पता. वहां पे अपन ने ऐसा ही निकाला था. यहाँ पे अपन डायरेक्टली अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 100 प्लस R अपॉन 100 पावर 3. ये 00 से मैं 00 कैंसिल करता हूं. मेरी 7 की वैल्यू आ गई 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर 3. अब बच्चे क्या है इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. बेटर नॉट टू डू दैट. जस्ट लीव इट लाइक दिस. सेकेंड केस पे चलते हैं. अमाउंट इज 4900 बिकॉज 49 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो रहा है. टाइम पता नहीं, रेट पता नहीं, but still we'll try to solve. I'll have 4900 equals to 100, 100 plus R upon 100 की पावर t. अब देखिए दो वेरिएबल आ गए, but still we'll try to solve. What I'm getting is 49. 49 को मैं 7 का स्क्वायर लिख सकता हूं, किसी को भी दिक्कत ना हो तो. और 7 की वैल्यू मुझे पता थी, so I'm putting the value 100 plus R upon 100 का क्यूब, और 7 का स्क्वायर करना था, मतलब इसका स्क्वायर. When I'll open the brackets, I'll have 100 plus R upon 100 की पावर 6
equal to 100 plus r upon 100 की power t. If I'll equate, I'll get t equal to 6. That's the correct answer. दो queries जो generally यहाँ पे आती है. The first one कि सर इन केस अगर ये 49 की जगह 48 होता तो क्या करते? ट्रस्ट मी फॉर दिस, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर पाते बिकॉज वो लॉग पे जाएगा, फिर वो ऐसे सॉल्व नहीं होगा. सो उस केस को लेके ही नहीं चलना है. 7 की पावर्स ही आएंगी हमेशा. वी कैन बी श्योर ऑफ दिस थिंग. सेकेंड थिंग, अच्छा, यू मस्ट हैव टेकन अ नोट ऑफ दिस. Take a note. I'll remove and I'll get you an alternate method, which is quite easier one. So I hope you must have taken a note. Okay, going to the alternate method. देखो थोड़ा सा समझ के करना, जल्दी नहीं है. अपन ने p को कन्वर्ट किया 7p में. कितने सालों में? 3 years में. So let's assume अगर आपने 100 रुपए लगाए थे तो 3 years बाद कितने हो जाएंगे? 700. 1000 लगाए थे तो 7000. 2000 लगाए थे तो 14,000. And similarly, मतलब whatever the value that you are investing is getting multiplied by 7 at the end of 3 years. Is that clear? Hope clear to all. 3 साल बाद इंटरेस्ट किस पे मिलेगा? A simple question. P पे या 7p पे? Obviously 7p पे. रूल बोल रहा है कि 3 सालों में वैल्यू इंटू 7 हो जाती है. तो जो 7p है अगले 3 सालों में 7 इंटू 7 49p बना लेगा. इफ यू ऑब्जर्व, p को आपने 49p में कन्वर्ट कर दिया. कितना? 3 plus 3, 6 years में. That is the direct answer, and I hope this is much easier as compared to the previous method that we have discussed. So you can solve any question using this method. It will surely gonna work. I hope that's clear. Okay, going ahead. यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में वी ऑलवेज ऑपरेट ऑन अमाउंट. आई टोल्ड यू दिस थिंग इन द प्रीवियस सेशन एज वेल कि सिंपल इंटरेस्ट में वी आर ऑपरेटिंग ऑन इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में वी हैव टू ऑपरेट ऑन अमाउंट बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला डिराइव होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट के थ्रू रूट होके आता है. देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज बाउंडेड कि आप पहले अमाउंट कैलकुलेट कीजिए एंड अकॉर्डिंगली विल गो इट. आई होप दैट्स क्लियर टू ऑल. Going ahead, the next concept related to compound interest, which is generally being asked upon, compounded semi-annually. Now, the biggest thing is कि compounded semi-annually basically होता क्या है? But before understanding the concept of compounded annually, we need to understand कि compounded annually क्या होता है. तो let me explain you compounded annually क्या होता है. Compounded annually का simple concept होता है कि you are calculating interest at the end of 1 year. तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या होगा? कि वी आर कंपाउंडिंग और वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ हाफ ईयर, दैट इज 6 months. तो अगर मैंने हर 6 महीने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो मैं 1 साल में इंटरेस्ट कितनी बार कैलकुलेट करूंगा? 2 बार. तो जब मेरा 1 साल होगा वो 2 हाफ ईयर के इक्वल हो जाएगा. 2 साल में 4 हाफ ईयर, 7.5 years में 15 हाफ ईयर्स. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं? मैं मेरे टाइम को डबल कर रहा हूं. एक और इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं साल भर के लिए 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था तो 6 महीने के लिए कितना दूंगा? 6% का. लॉजिकल बहुत है. तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज की व्हेन वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अपने को 2 चेंजेस करने पड़ते हैं. फर्स्ट वन इन टर्म्स ऑफ रेट, उसको हाफ कर दीजिए. सेकेंड इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको डबल कर दीजिए. एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. गो विद योर रेगुलर फॉर्मूला. रेट को आधा और टाइम को डबल करके सेम फॉर्मूला यूज करना होता है एंड यू विल गेट ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू कंपाउंडेड सेमी. I hope that's clear. So with this, we are done with the basic theory section of simple and compound interest. I have covered simple interest in the first session, compound interest in the second session, and this is the basic level of SI and CI. There are certain advanced level difficulty questions which we'll be discussing in advanced theory section. But as of now, SI CI ka theory portion is this that we have completed. I hope that's clear to all. You'll be having sorry, you'll be having all the sheets with you. Please do come up with the doubts. Please solve all the sheets thoroughly and come up with all the doubts. Winding up for today. Thank you so much.